Translation purport by Srila Prabhupada ki jai. After the dissolution of each and every Manu, the next Manu comes in order along with his descendants who rule over the different planets. But the 7 famous sages and the demigods like Indra and their followers such as Gandharvas all appear simultaneously with Manu. Purport. There are 14 Manus in one day of Brahma, and each of them has different descendants. The sense the Bhaktivedanta purport. So this chapter is called Calculation of Time from Atom, and it gives us an idea of the scales of universal time, unlike the kind of time and the time scale that we experience on this earth. Today's scientific knowledge is very limited to simply studying the observable universe and the time that is experienced on this earth. They have no knowledge of the different planetary systems in different dimensions, subtle dimensions. And they have no idea about the creation of Mahavishnu. They don't have a background knowledge about what is going on. Just like if in a stage, there is behind the stage there are so many things going on. A screen will be there in the front. So modern science is like only seeing the screen. Their senses see only the screen. So what their observable universe is only the screen. Behind it there are so many things that is happening. They try to understand little. They define a physical object, the properties of it. They learn gravity. They learn all these things. It is all simply what their senses are telling them. So this process of ascending knowledge is always limited, and they won't know what is really behind it. What is the situation? What is the background? They don't know. Now Bhagavatam here describes the background of creation. Talks about 14 Manus ruling over the planetary systems, the 3 planetary systems, in one day of Brahma. The Brahma's Kala Chakra or the time scale is different. Demigod's time scale is different. Our time scale is different. Whenever we are living in this world, whenever we are absorbed in this world, when we have no knowledge of this, we simply think existence means this world, this knowledge about this world, about this time scale. What history has recorded, that too imperfectly, maybe last 2000 years, some history is also distorted. So even modern history is also not real history. For instance, how our Indian history itself is twisted in so many ways, because the people who write the history are commissioned by the kings or the rulers. So they twist the history
So nothing is reliable. When we were kids, we take school textbook, we see history. Oh, school is teaching. How can it be wrong? Everybody is teaching. How can it be wrong? But as we grow up and we come out, even we don't have to become devotees also. They see that this is all totally imperfect history. So many things so entire modern civilization is like staying in a small hole, staying in a small well. No idea of what is behind space, what is behind time. And this is proved by science itself that they have no clue about. The more they find out, the more they research, the more they find out, even objectively. That's also small truth, but they don't have the whole truth. The modern physics, all they're all small truth because they are also following a very rigorous process. But they're limiting themselves. Rigorous process of evidence. And that is how they have discovered so many laws of physics and all those things. And from that they have, because it is connected to truth. But it is not the full truth. Okay, apple falls. What is the relation between velocity, speed, all this? They make one formula. They've studied the truth. That truth itself, after some time, in the 1900s, the beginning of the 20th century, that itself has changed. The idea of time and space itself is changed in modern science. Earlier, time was considered to be a psychological thing. Only space is Satya. Then space, you want to study the movement of objects. Object is truth, space is truth. You want to study the objects, how it moves in space. Therefore, time is required as an equation, T. That is how they started. For so many centuries, time is not a truth. But our Shastra says time is an energy, it's a truth. Kala is an element. Today, scientists have found out. Einstein's theory of relativity says that time is an ontological reality. Ontological reality means वो हमारा मन में नहीं है, time actually बाहर है. Kala, which we knew also. Our Shastra says Kala is moving the world, moment to moment. Kala Shakti is moving the world from present to future to future to future. It is moving. And that Kala Shakti is a representative, plenary representation of the super soul, Paramatma. So Paramatma is the supreme controller in the form of Kala. So these things are not at all to the Shastric perspective of what is this world is vastly expansive than what the modern scientists or modern science know about this world. Before they found out that time is an ontological reality, before theory of relativity, if somebody told, let us say in 1890 or somebody says that, there are different worlds, different Kala Chakra is there. Brahma's time is different, demigod's time is different, our time is different. Kya hai, sab imagination hai. Today it is scientifically possible and it is explainable
The time is different for different frames of reference of motion. It depends on your watch, your everything will slow down. If you go closer and closer to speed of light. There is a paradox, twin paradox. In physics, they keep using this. As per theory of relativity, if you are sitting in a flight, and if the flight is going closer and closer to speed of light, high speed में जाता है, then they say that you make one round trip and come. In your plane, your time would be half an hour. And you come back and land. On the earth, 10,000 years have passed. Because according to speed of your planet, your time is going slow. Demigod's time, 360. Our 360 years is one day of demigods. These are all scientific facts now. So how the entire universe is organized, how creation happens, how Brahma is born out of the lotus, on the lotus flower, which is stemming from Garbhodakshaya Vishnu. Then how Brahma is empowered to create all the other 3 planetary systems. How does these things, when we read these things in Srimad Bhagavatam, we understand that how insignificant we are and how the life on this earth itself is very insignificant. Unlimited jivas are there in Krishna's existence. Each jiva is part and parcel of Krishna. So, what is the result of reading this Srimad Bhagavatam? All these details when you read, one understanding you will come to. It is inconceivable. ये समझ नहीं सकता है. इसलिए भागवत में ये सब दिया है. नहीं तो सोचते हैं भक्ति का बीच में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम एटम. Krishna's Shakti is all inconceivable. His potencies are inconceivable. Because always man is trying to find what am I in this world, what is the world view. It's our natural tendency. दुनिया क्या है, हम क्या है, इसमें समझने को हर बार हम लोग कोशिश करते हैं. अपने अपने फिलॉसफी निकालते हैं. लेकिन भागवतम गिव्स द रियल ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन. तुम कुछ भी नहीं है, तुमको फ्री विल है, तुम सरेंडर करेगा तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मिलेगा. Krishna consciousness you can live. If you forget Krishna, you can live in karma. Either karma or Krishna. A choice Krishna has given us. ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया कृष्ण कॉन्शियसनेस बनने का है. ऐसा भगवान का ये सबको फ्रीडम दिया है. अनलिमिटेड जीवास आर देयर. They want to surrender, they can surrender. They want to live life of karma, they can
Just like spiritual world is eternal, material world is also the cycle of karma is also eternal. A temporary high because it does not the things don't stay as it is. But the cycle of creation, maintenance and annihilation is an eternal cycle. Just like in each day of Brahma, 12 hours of Brahma, there is a partial dissolution. Everything is wound up. But destroyed nahi hua hai. फिर again after 12 hours of night of Brahma, again everything else starts again, fresh creation starts. So ये सब इल्यूशन नहीं है, ये सब शक्ति है, भगवान की शक्ति है. पंचभूत भगवान की शक्ति है. सूक्ष्म भूतास, मनस बुद्धि, अहंकारा, these are all shaktis of Krishna. And Krishna is the origin, Shaktiman. So, conclusion क्या है इसमें सब? Everything will be seen by the devotee as inconceivable mahima, glory, vaibhava of the Supreme Personality of Godhead Krishna. We should become stunned by the opulence of Krishna and his energies. Man tries to see क्या purpose of life क्या है. Only through Shastra you can understand what is the purpose of life. Otherwise, nobody can know. No purpose. Born, enjoy, die. Only philosophy that can mentally speculate is the purpose of life is to enjoy. I do not know why I came, where I came from, nothing. उसको जानने का जरूरत ही नहीं है, जान भी नहीं सकता है. जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेगा वो जान भी नहीं सकता है. इसलिए साइंटिस्ट डोंट बिलीव. आफ्टर डेथ वेयर यू गो, आई एम नॉट बॉदर्ड. Ignorance. Only when you learn from the Shastra, then you understand. क्या है सब? That I take bodies after bodies in different, lives. And each life I think I am this body. And in that body, I think I am that body, and that I am, that body itself vanishes. So पूरा मेरा life जो मेरा कहानी है वो बंद डेथ का टाइम में. तो क्या मीनिंग है? The purpose of this material existence is the living entities, when they go through this birth to death, they have to understand, they will understand. Whether they want Krishna or not, that's a different matter. They will understand this material world is full of love. The path of karma is fully dangerous. Continuously one is bombarded with sukha, dukkha, according to punya and papa that you have earned. And nobody can guarantee that I will always do punya. So horrible things happen in this material world. And that is governed by the laws of karma. So living entities have to realize that without Krishna, my deep quest for happiness, quest for pleasure, quest for power, quest for love, that cannot be satisfied in my interaction with material energy, material bodies, material relationship. I'm always lacking something. कोई satisfied नहीं है, always feeling lacking something. That is because what is lacking? Our Krishna conscious relationship. Each of Atma is Amsha of Krishna, and therefore he is connected to the whole. As long as you forget the whole, you remember the whole, then our life changes.
And the idea of trying this jnanic path, of trying to understand the whole universe, you give up. Because I already understood the whole universe. It is Krishna's Vaibhava. I cannot measure it. And you see the universe, you appreciate Krishna. You appreciate Krishna's intelligence. So a person who is following the path of Bhagavata, following the path of Bhakti, by reading and hearing about the cosmic creation, cosmic dissolution, how the entire material world is maintained according to the karma of each jivas. Even after partial dissolution, the living entities go back. Again, when they come back, they continue their karma. The karma is so powerful. That is one thing in devotion service we understand, or anybody who understands the Vedic knowledge. They understand that my karma is determining everything for me. My actions determine, even spiritually also. Our action determine how fast we progress. कितना हमारा हाथ में दिया है. आत्मनाश करने के लिए भी बहुत दिया है. For progress of Atma also, the same freedom can be misused. So, a Vaishnava understands that my free will is so important. For me, not for me. My free will, by my free will, I can destroy myself. Generally, we think that something outside me is my enemy. I am not my enemy. हम हर बार सोचते हैं कि हमारा शत्रु सब बाहर है, हमारा जो अगेंस्ट है वो सब बाहर है, इधर तो कुछ नहीं है. नहीं, हमारा शरीर भी छोड़ो, हमारा जो फ्री विल है, that free will itself you can misuse. That means you can be your own enemy. एक कैसे हो सकता है? मैं अपने एनिमी कैसे हो सकता है? ग्रॉस बॉडी का एग्जाम्पल देता हूं. राइट हैंड इज वन पार्ट ऑफ हैंड, लेफ्ट हैंड इज अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. राइट हैंड से एक ब्लेड लेके इधर काट सकता है ना. सो आई कैन हर्ट माई सेल्फ. सिमिलरली माई फ्री विल इज लाइक ए ब्लेड. And it is not only for hurting yourself, to lift you up to go to Krishna. It is powerful. So, free will can be misused, can be used, or it can be kept idle. That is why devotees, they don't waste time. कितना है मेरा free will, मैं engage in devotion service. I want to go closer to Krishna. हर व्यक्ति अलग अलग है. अब देखो, our faces are different, our minds are different, our desires are different. It is all difference due to your accumulated free will. भगवान ने ये difference नहीं create किया. डिफरेंस अनुभव करने के लिए सिचुएशन क्रिएट किया है, लेकिन डिफरेंस किया है कौन? हम लोग ने किया. सो एक डिवोटी का अर्थ ये है कि ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल टू हिमसेल्फ. अपने अपने को कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी कर नहीं सकते हैं. यू हैव टू बी केयरफुल. Our mind can hurt my mind. My mind can
lift me up to back to Godhead also, can give me Krishna consciousness and can destroy me also. And I have once you understand this massiveness of Krishna's creation and his opulence, ये ज्ञान मार्ग छोड़ देते हैं. Scientists क्या trying to find out. But devotees, once they understand, they given up this. समझ नहीं सकता है. कृष्णा को भी नहीं समझ सकता है, कृष्णा की क्रिएशन को भी नहीं समझ सकता है. वो अनलिमिटेड है. होप छोड़ देते हैं. अपने एक छोटा घर समझ नहीं सकते हैं, पूरे दुनिया समझना है. एक ही रास्ता है समझने गए तो ये पढ़ना है किधर मनु 14 मनोज इन वन डे ऑफ ब्रह्मा. एक मनु को भी नहीं देखा है. यही पर्पस है. बट हु इज स्पीकिंग हियर? सेल्फ रियलाइज्ड पीपल. Maitreya is speaking to Vidura. Maitreya is Trikalagni. Maitreya has got, कोई ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम जैसे कहानी बोलते हैं वैसे नहीं बोलते हैं यहाँ. मैत्रेय देख सकता है, उसका दूर दृष्टि से वो देखता है इतना मनु है, ये है, ऐसा चलता है, सृष्टि ऐसा होता है. दैट मीन्स दैट मच कैपेसिटी और जीवात्मा has got. Maitreya is only a Jivatma. But Krishna, as a super soul in the heart, is in all knowledge. He can reveal everything. ये दुनिया कैसा चलता है. हम ये दुनिया बोलते हैं, हम सोचते हैं अर्थ. इनका वो अर्थ काउंट में ही नहीं है. मर्त्यलोक. There is स्वर्गलोक, there is पाताला. All these, वो सब मिला के पूरा पिक्चर दे रहे हैं इधर. वे सब मिला के. सो एटलीस्ट हम लोग साइंटिस्ट तो नहीं है, लेकिन इतना तपस लेके साइंटिस्ट स्टडी करते हैं ये दुनिया को. वो नॉलेज है, वो नॉलेज की पल है, ये लाइट है, ये इसका एप्लीकेशन है. आज देखो, आप जो कुछ ये रूम में देखता है, ये सब ह्यूमन बीइंग्स एफर्ट टू अंडरस्टैंड नेचर. सत्य हर जगह में है, छोटा सत्य है इनके पास, लेकिन क्या अल्टीमेटली क्या है? स्पेस क्या है, टाइम क्या है, लाइट क्या है? एक भी ट्रूथ एकदम नीचे तक जाके नहीं देखा. सब ऑब्जर्व ट्रूथ. नीचे तक जाके देखने का है तो भागवतम जाने से सबसे नीचे कौन है? भगवान है. You learn Brahma, you study Brahma, then you study the planetary system. बाद में किधर वो प्लानिटरी सिस्टम का रूट किधर है? एक स्टेम है, लोटस स्टेम है. ये तो सब काम का सोफिस्टिकेटेड रहना है. ये सब चाइल्डिश दिखता है लोटस स्टेम एंड ऑल दिस थिंग्स क्रिएशन में. नो, इट्स नॉट. द लोटस इज अ वेरी वंडरफुल जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट. लोटस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन इट. एनी क्वेश्चंस? Yes. So nowadays, machine learning, AI, artificial intelligence, very prominent, and they are making robots. They're speaking also, news reading, everything. In that case, if we ask if that soul is there,
they may say that whatever we are doing, machine is also doing. So in that sense, how we will tell about this concept. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पहले से बोल दिया, आप डिस्कवर करने के पहले हमारा, हम जो इंटेलिजेंस, जो मटेरियल इंटेलिजेंस बोलते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. तुम लोग अभी तक डिस्कवर नहीं किया आर्टिफिशियल ईगो, उसको फॉल्स ईगो बोलते हैं हमारे शास्त्र में. उसका फील्ड अभी तक तुम लोग डिस्कवरी शुरू नहीं किया. आर्टिफिशियल माइंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल ईगो, दिस इज द सूक्ष्म शरीर. Soul is different from that. Krishna's material यंत्र creation itself is so sophisticated. Actually हम सब रोबोट है, लेकिन पीछे सोल है. सोल डिजायर करता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा, ये रोबोट के द्वारा ही हम लोग, हमारा जीवन चलता है. अब भक्ति योगी बनने से क्या होता है, ये रोबोट को भक्त बनता है. हाँ, you should not think I am this body. This body, mind, my present body, mind, everything is my bhakta. I am different. I am spiritual bhakta. I am eternal servant of Krishna. अभी ये यंत्र is my robot. इन लोग रोबोट क्यों बनाते हैं? उनसे सेवा लेने के लिए ना. तो हम भी ये रोबोट को क्यों मेंटेन करता है? हाँ, मेरा आत्मा के लिए सेवा लेने के लिए. स्वार्थ गतिम ही विष्णु, मेरा स्वार्थ गति विष्णु है, शरीर नहीं है. वो सेवा में तुम भी लग जाओ. सो दिस बॉडी माइंड वी शुड नॉट आइडेंटिफाई. मैं ये हूं, क्या ये हूं? कितना दिन सब चेंज हो रहा है. It's such a sober understanding to feel that I am eternal servant of Krishna and this is a temporary body. मेरा सेवा करो तुम. अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलना है तुम सेवा करो. हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? हमारा प्रेजेंट इंटेलिजेंस है. ये शरीर में जो है, सूक्ष्म शरीर है, उसको हम जो सिखाता है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो उसको सिखाता है वही बोलेगा, वही बोलेगा. उसको लर्निंग कैपेसिटी भी है, क्योंकि इट इज अ प्रोसेस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी बिविल्डरिंग. इट्स अ फैक्ट, वेरी बिविल्डरिंग. हमारा पूरा सोलफुल जपा एक इसमें डाल दिया, डाल के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट क्रिएट किया. जस्ट लाइक चैट जीपीटी. ऐसा इधर एक सोलफुल जपा जीपीटी एक बॉट ने, एक डिवोटी ने रेडी किया. अरे कोई कितना, अभी टेलीग्राम में जाओ, किसी के पास फोन है निकालो, टेलीग्राम जाओ, टेलीग्राम खोलो, उसमें जाके सोलफुल जपा जीपीटी टाइप करो. वो फ्रीली अवेलेबल है, कोई यूज़ कर सकता है. सोलफुल जपा जीपीटी, सोलफुल जपा जीपीटी. उधर जाके जपा के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इमीडिएटली वो रिप्लाई दे देता है. ओके, यू गॉट इट, ओपन इट. सो सम क्वेश्चंस people I have asked and it has answered. मैंने लिखा है मोस्ट ऑफ इट, लेकिन मेरे से अच्छा आंसर देता है. क्योंकि उसका प्रोसेसिंग टाइम ऐसा है. ये चैप्टर लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा, फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा स्कैन करके टक करके आंसर निकलता है. अच्छा, क्या प्रश्न पूछना है आप लिखो जपा के बारे में.
That all I have asked. But आंसर कर सकता है. Ask one difficult question. What is foreground? What is foreground mind? Question पूछा है, अभी आएगा, अभी प्रोसेस कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि नहीं बहुत जगह में फोरग्राउंड यूज किया ना, तो उसको सब प्रोसेस करता है, लेकिन 5 मिनट के बाद आ जाता है. Like that, if you ask what is attention, it will take long time, because attention कितना बार बोला है इसमें. Okay. Anyway, this is let it come, answer will come. This is you have to understand this artificial intelligence को आज का जो खेल देख रहे हैं ना, it is a very good material for spiritual realization. It is possible that, because this is actually Jada Sharira and Susma Sharira put together is 100% robot. लेकिन रोबोट के पीछे आत्मा है. आत्मा के लिए माया, you want Maya Rasa, then this system is working for Maya Rasa. You want Krishna Rasa, the same system will work perfectly for getting Krishna Rasa. I answer. What is foreground? Foreground mind is a conscious mind that is actively engaged in the present moment, responding to the situation with action. It is part of the mind that is actively engaged in task at hand, such as chanting and hearing attentively. तुमको आंसर मिल गया, मेरे को नहीं आया. बट एक ही आदमी से पूछ रहे हैं हम लोग. मैं भी उनसे ही पूछ रहा है, तुम भी उनसे ही पूछ रहे हैं. तुम्हारा आंसर मिल गया. अभी इसका क्या होगा मालूम नहीं. इसका अलग आंसर आता है क्या, देखेंगे. प्रभु सोल के बारे में कैसे, जैसे कोई एआई से कोई रोबोट बोल रहा है और वो साइंटिस्ट यदि बोले कि सोल डजंट एग्जिस्ट, सो दैट केस अभी तो हम लॉजिक देते हैं कि वो प्रूव नहीं कर सकते हैं. वो शास्त्र हमारे लिए प्रूफ है, उन लोग के लिए थोड़ी प्रूफ है. तो उन लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं. जो एथिस्टिक है उसको योगमया समावृता, कृष्णा इज कवरिंग देम. Those who do not surrender to Krishna will never get convinced that there is soul. They'll never get convinced. Because वो कितना माइक्रोस्कोप लेके जाओ, क्या कुछ भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके जाओ, कुछ भी पकड़ नहीं सकता है, सोल को पकड़ नहीं सकता है. You have to have Shraddha from the Shastras, and then Shraddha, you don't stop with Shraddha. After that you get spiritual realization. शुरू में श्रद्धा चाहिए, बाद में अपने अपने आत्मा, स्पिरिट और मैटर की डिफरेंस क्लियरली समझ जाता है. ये शरीर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस सोल से आता है. आर्टिफिशियल माइंड की थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग जो है वो सोल से आता है. सोल इज अ सोर्स ऑफ इट. दे विल क्रिएट अ रोबोट, लेट्स से वन कुक, वन रोबोट विल कुक, तो कुकिंग करेगा. आप उनसे बात करेगा, हाउ आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग नाइस बोलेगा. सब फीलिंग का क्वेश्चन सब वो आंसर करेगा. अगर आप सैड दिखते हैं, द कुक कैन बी ट्रेन टू आस्क, प्रभु वाई आर यू फीलिंग सैड. लेकिन वो उसको फीलिंग नहीं है. वो फीलिंग प्रोसेस कर सकता है, बट इट कैन नॉट फील.
The soul can feel. How you feel meaning, it cannot feel. There is no, it can process meaning, but it cannot feel meaning. You cannot say a robot बड़ा ज्ञानी है, सब ज्ञान उसके पास है, फिर भी वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान प्रोसेस करने का कैपेसिटी उसके पास है, लेकिन उधर ज्ञानी नहीं है, आत्मा नहीं है. So this will eventually, you see, when technology also expands, world gets divided, Sura and Asuras. सबको सब मानेगा नहीं, because that is how the material world is created. Material world जिसके लिए create किया है, जिसको जो सुरा है, those who are God conscious, they will go back to God. Others they desire to continue to remain here. So they will have faith in the material world. That is why they are trying everything, trying to prolong life, trying to defeat death. All childish endeavors. Any other question? Yeah. Take one, take mic. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, what is the actual meaning of mind, intelligence, and ego, and what are their differences? Just like gross body, this gross body, what is the difference between hand and legs? Different Functions. But this is of same gross. Similarly, subtle body is subtle energy. Just like hand is different from the leg. Mind का function अलग है, इंटेलिजेंस का अलग है, ईगो का अलग है. ईगो का फंक्शन मेरा स्पिरिचुअल ईगो को डुप्लीकेट करना. माइंड का फंक्शन मेरा स्पिरिचुअल माइंड को डुप्लीकेट करना. और जो इंटेलिजेंस है मेरा माई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मेरे को इंटेलिजेंस है, लेकिन पर्पस अलग है, कृष्णा को सर्व करना. बट उसका इमिटेशन मेटीरियल इंटेलिजेंस क्या है? माया रस के लिए कैसा काम करना. सो वी आर, let us say you got two kinds of possibility. One is to enjoy Krishna rasa in the spiritual world. You forget Krishna. If you forget Krishna and you want to enjoy rasa for yourself, self-centered. Maya rasa means कृष्णा का भूल गया और मैं सेंटर हूं, मेरे लिए सब पूरा दुनिया से मेरे को एंजॉयमेंट देना है और मैं पूरा दुनिया से एंजॉयमेंट लेना है. ये ऑप्शन है. ये ऑप्शन जब आप चूज करते हैं, आपको वो स्पिरिचुअल बॉडी एक काम नहीं कर सकता है, वो इंटरनल पोटेंसी की है. तो इसलिए इमीडिएटली मटेरियल वर्ल्ड में फॉल्स ईगोइज्म आता है और फॉल्स ईगो, एक शरीर डुप्लीकेट शरीर मिल जाए. नॉट ओनली शरीर मनस बुद्धि अहंकार दे देते हैं. वो अहंकार क्या है? आई एम दिस बॉडी. सो एवरीबडी इज मूविंग. हु इज हेडिंग एवरीथिंग? द आइडिया आई एम द बॉडी इज हेडिंग. अहंकार. I am the body, my body should enjoy, my body should get pleasure, my bodily ego should have social pleasures, love, everything, body, everything. So that is why we have got this body. But the original function of knowledge, pleasure, happiness, power, this is all soul's property. Prabhupada says lust is a perversion of love. परवर्शन ऑफ लव. तो आत्मा का ही गुणा है सब. ये मशीन आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है. यू कैन,
Artificial robots can help living entities. So हम एग्जैक्टली ऐसा ही बिलीव करना है, ये एक रोबोट है. इन लोग टेक्नोलॉजी इतना प्रिमिटिव है इनका रोबोट, एक स्किन भी नहीं बना सकता है. स्किन मटेरियल है कि नहीं, ब्लड मटेरियल है कि नहीं, फ्लैश मटेरियल है कि नहीं, तो क्यों नहीं उन लोग क्रिएट करता है ऐसा. दे आर फार फार अवे. कृष्णा's क्रिएशन ऑफ रोबोट, दिस यंत्र इज सो एडवांस्ड. इट इज इतना एडवांस्ड है, प्रभुपाद एक जगह में बोलते हैं कि let them produce one robot which will produce another robot. Two robots join together, they'll produce another robot. तुम लोग हर रोबोट को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है. हम ऐसा रोबोट, कृष्णा बोलते हैं मैं ऐसा रोबोट क्रिएट किया, फर्दर रोबोट क्रिएट हो जाएगा. कुछ भी करना नहीं, सिस्टम सेटअप इतना. इफ यू लुक एट इट फ्रॉम मॉडर्न टेक्नोलॉजी व्यू, नो, Krishna is so brilliant. The creator is so brilliant. सब एक्साइट हो जाता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ गया. अरे तुम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. This will help devotees in preaching and doing the things, taking less time. Technology, AI, GPT. हाँ, हम भी यूज करेंगे ना, हम भी यूज करेंगे. हम अच्छा, पहले प्रिंटिंग नहीं था ये दुनिया में, प्रिंटिंग आ गया, हम यूज कर रहे हैं कि नहीं. भक्ति को यूज हो गया, तो इसलिए अभी ये देखो सोलफुल जपा इमीडिएटली डाल दिया जीपीटी में, बॉट सिस्टम में, यूज करो. तो सूक्ष्म शरीर जैसे रेप्लिकेट होता है, मनस बुद्धि अहंकार, रियल मनस, रियल बुद्धि, रियल अहंकार इज रेप्लिकेटेड इनटू फॉल्स मनस, फॉल्स बुद्धि, फॉल्स अहंकार. दैट डजंट चेंज. वो सो जाता है, एक नया आता है. So this gross शरीर is there. It is also replicated of real Panchbhut, means there are real Panchbhuts. Yes, there is in Vaikuntha there is real earth, water, fire, spiritual earth, water, fire, air, ether. I'll show you one verse in Chaitanya Charitamrita. Prabhupada बोलते हैं Vaikuntha, earth, water, fire, air, ether. So this Yamuna and Ganga which is coming from spiritual world, this is real. That is real. That is real. Similarly, when Krishna comes, his body is real, not this Panchabhuta. That's why he said he comes as he is. He is everything. Hare Krishna. So, in mind buddhi ahankar, this manas buddhi ahankar, where does it lie, this subconscious mind? The question itself is wrong. Where means you are thinking of space. Right? Space is one of the gross elements. It is beyond space. Manas, buddhi, space is ether. Earth, water, fire, air, ether. So it is in another dimension beyond, but it is situated. Because it is acting in this body, you can say that body के अंदर है. आप, where is the soul? It is in the heart. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पकड़ सकता है वो. हाँ, no, it is in the heart. Actually, it is not in the heart. It is acting through the heart, the point of contact. That is why you cannot find it in the physical dimension. It is said that Paramatma Atma is sitting side by side. परमात्मा का रूप है, तम साइस है, मिलता है. सो ये स्पेस में नहीं है वो, लेकिन फिर भी है कांटेक्ट पॉइंट. जो किधर इन रियलिटी किधर भी हो तुम, तुम्हारा प्लग इन पॉइंट ये शरीर का हार्ट है. Your artificial system gets energy, the plug-in point.
एक प्लग डालना है, वो प्लग से सब आता है, तो प्लग इन पॉइंट किधर है? हार्ट है. इसलिए इफ यू थिंक इट इज मटीरियल हार्ट, then you should be able to find out through so much fine electron microscope. Means very, very fine it is. They can see very fine things, but they cannot catch. So they will never find through microscopes the soul. It's in another dimension. In another dimension, impacting this dimension through the heart. Soul और शरीर की कनेक्शन किधर है? हार्ट है. So therefore we say he is situated in the heart. क्योंकि उधर से कनेक्शन शुरू होता है. Krishna also says in the Bhagavad Gita, like a sun radiates heat, the soul is situated in the heart, and then it radiates consciousness. Awareness का starting point है heart. So this question is subconsciousness. Where is it? What is the role? This mind. Now come to your question. You asked another question. His question, yes. Subconscious mind, where exactly what is its role and is it part of the mind? That you ask. What is the role you ask? Where is it you ask is difficult. If this mind is there, then how does it is getting connected with mind? Some different entity. You see, subconscious mind is like the hard disk. Conscious mind is like the RAM memory. अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा मेमोरी चाहिए. क्या क्या आइटम उधर से, सपोज यू आर डूइंग ऑन वर्ड, यू ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड के लिए जो जो चाहिए सब हार्ड डिस्क है उठा के एक टेम्पररी मेमोरी में लाता है, उसको रैम बोलते हैं. तो वो लिमिटेड कैपेसिटी होता है. मेरा कॉन्शियस माइंड लिमिटेड. अभी मैं कुछ सब्जेक्ट बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उतना ही प्रोसेस कर रहे हैं. लेकिन आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें क्या क्या है. सो व्हाट इज रिलेवेंट फॉर यू टू कनेक्ट एंड मेक मीनिंग आउट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, दैट मच विल कम अप फ्रॉम द सबकॉन्शियस एंड कनेक्ट, एंड इट विल गिव यू एन एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज दैट अगेन इज मेमोराइज्ड बाय द सबकॉन्शियस. सो साइकिल चलता है. So subconscious mind is nothing but it a repository of our experiential memory. Experiential means multi-sensory. कभी विजुअल मेमोरी होता है, कभी प्लेशर की मेमोरी होता है, सैडनेस की इमोशनल भी होता है मेमोरी. सब मिला के वो पूरा उसको मेमोराइज कर देता है. And that is in the subconscious mind. So you understand the function of conscious mind and subconscious mind. Just like now, you use your conscious mind to think about the different bhavanas of Japa. As you think, as you contemplate, they will go into your subconscious mind. When you start your japa, subconscious mind will immediately load that in your conscious mind. तुम पूछने का जरूरत नहीं, ट्रिगर हो जाता है. जैसे तुम्हारा पेरेंट्स को तुम देखेगा, तुम कुछ करने का जरूरत नहीं, इमीडिएटली ट्रिगर आ जाते हैं मेरा पेरेंट्स है. यो सबकॉन्शियस में है. 2 मिनट तक किसी का ब्रेन डैमेज हो गया, उसको फादर मदर को भी रिकग्नाइज नहीं कर सकते. So we should know how it functions. We should take benefit from subconscious mind. That is why in our Shastric understanding, we should have sadachara. Sadachara, we should train our subconscious mind in sadachara. Getting up in the morning, taking bath, going for Mangala Aarti. ये सब ट्रेन हो जाएगा. हम फ्री विल यूज करने की जरूरत नहीं है. और आज जाने का है या नहीं जाना, अगर हैबिट बन गया तो हो गया.
उधर क्यों फ्री विल यूज करता है? फ्री विल एनर्जी सेव करो. सुबह उठ के फर्स्ट क्वेश्चन फ्री विल, जाना का है नहीं जाना है. फ्रीज योर फ्री विल. इसके लिए क्यों फ्री विल चाहिए? प्रभुपाद बोल दिया है जाने का है, सोचने का क्या बात है? चित्तम इज सबकॉन्शियस. Chittam is subconscious. Contaminated consciousness. That is Chittam. Thinking, feeling, willing. Thinking is by mind and feeling by intelligence and willing is by ego. Is it like No. Feeling is by mind, thinking is by intelligence, willing is by ego. Heading. Each of them is doing all three. Because you cannot ego without thinking and feeling. You cannot feel without thinking. अगर कुछ फीलिंग है तो उसके पीछे थिंकिंग है. बट हु इज लीडिंग? when intelligence is active, your thinking is leading. When feeling it is very clear. Your feeling body is mind. Your intelligence body is intelligence. And your ego body is power body, free will.